Good morning, students. Welcome to Edina Institute of Science and Technology, Sagar. I am Anurag Jain. Now presenting the video lecture of Unit 3rd. Subject is Advanced Computer Network. The next topic is Multicast Routing Protocols. That is topic number 5th. And topic number 5th contains 7 protocols. We will move multicast routing protocols. चलिए तो हम देखते हैं मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। पहला प्रोटोकॉल है हमारा इसके अंदर डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल। द डिस्टेंस वेक्टर मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स डिफाइन इन RFC 1075 इज अ राउटिंग प्रोटोकॉल यूज्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन बिटवीन राउटर्स to facilitate the transportation of IP multicast packets among network. It formed the basis of the Internet's historic multicast backbone and M-bone. The DVMRP is used for multicast over IP network without routing protocols to support multicast. The DVMRP is based on the RIP protocols but more complicated than RIP. DVRMP maintains a link state database to keep track of the return path to the source of multicast packaging. The कुछ operations है इसके. First operation है the first message for any source group pair is forwarded to the entire multicast network with respect to the time to live TTL of the packets. Second, TTL restricts the area to be flooded by the messages. Next, all the leaf routes that do not have members on directly attached subnetworks sends back messages to the upstream routers. Next, the branch that transmitted a messages is deleted from the delay tree. Next, the delivery tree, which is spanning to all the members in the multicast group is constructed. ये हमारा डायग्राम है. यहाँ पर एमबोन नेटवर्क है, राउटर्स है एंड सिस्को DVMRP टनल्स है एंड यूनिकास्ट टनलिंग है. इसके द्वारा हम जो ये हमारे राउटर्स हैं और ये हमारा डोमेन्स है. चलिए सेकंड है हमारा मल्टीकास्ट ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट. Multicast open shortest path first is an extension of OSPF open shortest path first. ये इसका एक्सटेंशन वर्जन है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ का मल्टीकास्ट. प्रोटोकॉल दैट फैसिलिटेट्स interoperation between unicast and multicast routers. MOSPF is becoming popular for properties network for proprietary network multicast and may eventually RIP routing protocols and routing information protocols. So multicast information goes out and OSPF link state advertisements LSF that information allow a MOSPF routers to identically active multicast group and the associated local area network, that is LANs. MOSPF creates a distribution tree. ये distribution tree for each multicast source and group and another tree for active source sending to the group. The current state of the tree is cached. Each time link state change or the cache timeout, the tree must be recomputed to accommodate new change. MOSPF uses both source and destination to send datagrams based on information in the OSPF link.
State database about the autonomous systems topologies. A group members LSA makes it possible to identify the location of each group member. The shortest path for the datagram is calculated from that information. MOSPF was designed to network compatible with non-multicast OSPF routers for forwarding रेगुलर यूनिकास्ट ट्रैफिक। ये जो हमारा मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। फिर ये हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि जो सोर्स फर्स्ट है और ये डिफरेंट टाइप्स के राउटर से कनेक्टेड है। राउटर एफ हैज़ अ न्यू मेंबर फॉर ग्रुप XYZ and group XYZ, that is group I have a new member for group XYZ. Use OSPF link state advertisements to construct distribution tree. A tree must be recommended when a link state change occurs. चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्रॉस बेस्ड ट्री में। CBT was the earliest central based tree protocol and is the simplest. When a receiver joins a multicast group, its local CBT routes look up the multicast address and obtain the address of the core routes for the group. It then sends a join message for the group towards the core. At each routers on the way to the core, forwarding state is instanted for the group and acknowledgement is sent back to the previous router. In this way, multicast tree is built as shown in figure. multicast tree में ये है कि जो हमारा जहाँ से हमारा राउटर से जो IP एड्रेस आ रहा है वो जिस आगे राउटर को सेंड कर रहा है वो दोनों का वो एक प्रकार का ट्री बना के उसको अपने अंदर क्या करेगा, डेटा को रखेगा। ये है रिसीवर है, रिसीवर भी ये मल्टीकास्ट ट्री बनी हुई है। ये रिसीवर बी है, ये रिसीवर सी है और ये सभी ने एक दूसरे को ज्वाइन किया हुआ है। और सेम यहाँ पर है, ये जो एरोज है वो डेटा पैकेट्स हैं एंड ये जो बंडल्स है ये क्या है, हमारे शेयर ट्री है। नेक्स्ट हमारा PIM प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट। प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट इज अ फैमिली ऑफ मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल। ये एक मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स की फैमिली है फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के लिए नेटवर्क्स दैट प्रोवाइड वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी। ये नेटवर्क्स वन टू मैनी और मैनी टू मैनी डिस्ट्रीब्यूशन को अलाउ करता है ओवर लैन, वैन और इंटरनेट की। It is termed protocol independent because PIM does not include its own topology discovery mechanism but instead uses routing information supplied by other routing protocols. PIM is not dependent on a specific unicast routing protocol. It can make use of any unicast routing protocols in use on the network. PIM does not build its own routing table. PIM अपनी खुद की राउटिंग टेबल को बिल्ड नहीं करता है। PIM uses the unicast routing table. ये unicast routing table का यूज़ करता है for receiving path forwarding. There are four variant of PIM. First is PIM sparse mode. Second, PIM dense mode. थर्ड, बिडिक्शनल PIM, इसको हम बोलते हैं BIDIR, वाई डायरेक्शनल PIM, एंड नेक्स्ट है PIM सोर्स स्पेसिफिक मल्टीकास्ट। ये एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें एक हमारे पास सर्वर है, एक क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, ये राउटर्स है, ये लोकल मल्टीकास्ट राउटर्स है एंड ये स्विच लगा हुआ है IGMP और ये IGMP PIM एंड UDP एंड RTP मल्टीकास्ट ट्रैफिक
है और ये लेन से कनेक्टेड है, ये वाला एरिया। The most common mode in PIM, the PIM is the sparse mode. It is used for transmission of data to nodes in multiple internet domains, where it is expected that only a small proportion of the potential nodes will actually subscribe. Dense mode in contrast to spare mode is used when it is expected that a large portion of the potential node will subscribe to the multicast. In source specific multicast path, also called trees, originate or are rooted at a single defined source, whereas bidirectional PIM is not source specific. The term protocol independent means that PIM can function by make use of routing information, supplies a variety of communication protocols. In information technology, a protocols is a defined set of rules. Protocols क्या होता है? एक set of rules होता है that endpoints in a circuit or network employs to facilitate communication, और जो communication के लिए हम use करते हैं protocols set of rules. M1 मल्टीकास्ट बैकबोन, एक डायग्राम है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के एम्बोन्स लगे हुए हैं, इंटरनेट कनेक्शंस हैं और ये डिफरेंट से कनेक्टेड है। M1 शॉर्ट फॉर मल्टीकास्ट बैकबोन। मल्टीकास्ट बैकबोन को ही हम M1 बोलते हैं। was experimental backbone and virtual network built on top of the internet for carrying IP multicast traffic on the internet. It was developed in early 1919 and required specialized hardware and software. ये जो मल्टीकास्ट बैकबोन है, ये हम एक्सपेरिमेंटल बैकबोन और वर्चुअल नेटवर्क्स को बिल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि आईपी एड्रेस को अपने अंदर कैरी करके रख सके मल्टीकास्ट ट्रैफिक में इंटरनेट के ऊपर। और ये 1990 के समथिंग आया था और इसमें स्पेशल टाइप्स के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। सिंस द ऑपरेशन ऑफ मोस्ट इंटरनेट राउटर्स हैव disabled IP multicast due to concern regarding bandwidth, tracking and billing. The M1 was created to connect multicast cable networks over the existing internet infrastructure. जो existing infrastructure होगा उस पर M1 क्या करेगा? ये नेटवर्क्स को इंफ्रास्ट्रक्चर में कनेक्ट या क्रिएट करेगा। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। टोपोलॉजी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैश एंड स्टार नेटवर्क। इसमें मैश और स्टार नेटवर्क का कॉम्बिनेशन होगा। आईपी एड्रेस ये होगा एंड राउटिंग स्कीम होगी डीपी, एमआरपी एंड एमओएसपीएफ। सेशन रजिस्ट्रेशन होगा आईजीएमपी एंड ट्रैफिक रिक्वायरमेंट होगी ऑडियो 30 to 64 किलोबिट्स पर सेकेंड एंड वीडियो 120 किलोबिट्स पर सेकेंड। इंटरनेट मल्टीकास्ट बैकबोन ये है is the multicast capable backbone of the internet. Multicast is the way of sending data packets from a host computer to a set of host called multicast group. एक कंप्यूटर से मल्टीकास्ट ग्रुप में सेंड करने के लिए। मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट एंड इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स। एंड लास्ट है इसका इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ये इसका एक डायग्राम है। जो भी हमारे राउटिंग जो राउटर्स हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसको हम देख लेते हैं। इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ये लास्ट प्रोटोकॉल है। इज एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ये जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है उसका एडवांस है। सो दैट इज यूज्ड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क फॉर ऑटोमेटिंग राउटिंग डिसीजन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ये ऑटोमेटिक राउटिंग डिसीजन और कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज करते हैं। द प्रोटोकॉल वाज डिज़ाइन बाय सिस्को। ये सिस्को के द्वारा डिज़ाइन किया गया था एज अ प्रोप्रेटरी प्रोटोकॉल्स अवेलेबल ओनली ऑन सिस्को राउटर्स। ये केवल सिस्को राउटर्स में ही अवेलेबल होता है ये प्रोटोकॉल।
functionality of EIGRP was converted to an open standard in 2013 and was published with information status in RFC 7868 in 2016. EIGRP is used on a router to share routes other routing with other routers within the same autonomous system, unlike other well-known routing protocols such as और दूसरे भी routing protocols हैं RIP, other हमारे protocols हैं RIP, EIGP only sends incremental updates, reducing the workload on the routers and the amount of data that needs to be transmitted. EIGRP replaced the Interior Gateway Routing Protocol in 1993. One of the major reasons for this was the change to classless IP version 4 address in the Internet protocols, which IGRP could not support. ये हमारा protocols था. There are two major version of EIGPR, version 0 and version 1. Cisco iOS versions earlier than 10.3, 11.0 and 11.3, and this one is last protocol, last CIDR, classless interior domain routing. Classless interior domain routing stand for classless interior domain routing. CIDR was developed in 1990s as a standard scheme for routing network traffic across the internet. जो राउटिंग हमारे ट्रैफिक्स थे उसके लिए डिज़ाइन किया गया था एक स्टैंडर्ड उसको हम CIDR बोलते हैं. इज एन अल्टरनेटिव टू traditional IP subnetting that organized IP address into subnetworks independent of the value of the address themselves. CIDR is also known as supernetting, as if effectively allow multiple subnets to be grouped together for networks. Classless interior domain routing is a method for allocating IP address and IP routing. The Internet Engineering Task Force introduced CIDR in 1993 to replace the previous addressing architecture of classful network design in the Internet. Its goal was to slow the growth of routing tables on routing across the Internet and to help slow the rapid exhaustion of IP version 4 address. And IP address are described as consisting of two groups of bits in the address. The most significant bits are the network prefix, which identifies a whole network or subnet, and the least significant set forms the host identification identifier, which specifies a particular interface of a host on the network. This division is used as a basic of traffic routing between IP network and for address allocated policies. क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई एड्रेस दिए गए हैं. क्लास ए एड्रेस जो है सपोर्ट करता है मिलियंस होस्ट ऑन ईच 127 नेटवर्क, एंड क्लास बी सपोर्ट करता है 65,000 होस्ट ऑन ईच 16,000 नेटवर्क, एंड क्लास सी सपोर्ट करता है 254 होस्ट ऑन ईच ऑफ 2 मिलियंस नेटवर्क, एंड जो क्लास डी है वो रिजर्व है फॉर मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए, और क्लास ई भी हमारा रिजर्व है फॉर फ्यूचर यूज के लिए और रिसर्च डेवलपमेंट्स पर्पस के लिए. तो यहाँ पर हमारे प्रोटोकॉल सारे ख़त्म हो जाते हैं. नेक्स्ट में हम बात करेंगे मल्टीकास्ट ट्री. चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग.